ये साबित होते हुए इस मैच में हार्दिक पांड्या, पिछले मैच जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था पिछले रविवार को, तो वो प्लेयर ऑफ द मैच थे, मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई। सुपर 4 में 2 टीमें जाएंगी फाइनल मुकाबले में, जो टॉप पोजीशन पर रहेंगी। हार्दिक आइटम ओवर द विकेट, एक और शॉर्ट गेंद पुल लगाने की कोशिश, उछलते हुए रिजवान के साथ एक बार फिर प्रेशर को बढ़ाते हुए भारतीय बॉलर, क्योंकि जितनी डॉट बॉल रहेंगी प्रेशर पड़ेगा। आप जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके आसपास यदि रन नहीं बनाएंगे तो रिक्वायर्ड रन रेट और बढ़ता जाएगा, और ऐसी पोजीशन में आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। और समय गुजरता जा रहा है, लगभग आधा खेल पूरा हो जाएगा इस गेम के साथ, क्योंकि 9.5 ओवर की बॉलिंग हो चुकी है भारत की ओर से और 75 रन स्कोर बोर्ड पर। पांड्या की इस ओवर की 10वें ओवर की आखिरी बॉल टर्न किया ऑन साइड पर, विराट कोहली ने गेंद को फील्ड किया, नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो किया, क्योंकि देख रहे थे कि मोहम्मद रिजवान धीरे धीरे कदमों से आगे जा रहे हैं रन लेने के लिए। तो 10 ओवर के खेल के बाद पाकिस्तान का स्कोर है इस समय 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छा ओवर पूरा किया कहा जाएगा हार्दिक पांड्या के द्वारा, 2 ओवर में 23 रन। पिछले ओवर में जो पहला ओवर था उनका वो 14 रन वाला था, और ये ओवर उससे कम रन का। और भारत की ओर से 5 बॉलर से अभी तक कप्तान ने बॉलिंग करा ली है, रोहित शर्मा ने। मोहम्मद रिजवान 58 मैच में 1783 रन उन्होंने बनाए हैं। जो शतक एक उनके नाम पर है 104 रनों का, वो लाहौर में उन्होंने बनाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 फरवरी 2021 को। और जो बैटिंग का एवरेज है उनका 52.44 और स्ट्राइक रेट 128.36। तो मुकाबले में अब अंतिम 10 ओवर में यानी 60 गेंदों में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, ये देखना बाकी है। 60 गेंदों पर 106 रन चाहिए पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए। शंकर, बीच की स्थिति आ गई है, अब आपको करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि ये मैच इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो 2 टीमें हैं वो उतने मजबूत नहीं है, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो इस मैच पर डिपेंड करेगा कि पहले स्थान पर कौन आगे बढ़ेगा, और दूसरे यदि इस मैच को जो हारने वाली टीम है उसके सामने भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि उसे बाकी के दोनों मैच जीतना ही होगा किसी भी तरह से। Yes, if the team whichever loses today will have to win the remaining matches to be in the top 2. So that's very important. So the team would definitely like to go for a win. But you remember India scored 93 in the first 10 overs, where Pakistan has scored just 76. And they have to score 107 in the next 10, which is slightly an uphill task considering the way the Indians batted in the second 10 overs. They were not able to get the 93 runs what they got in the first 10 overs. So they had to remain content with something less. Whereas Pakistan has got an advantage in the final 5 overs when you are chasing. There is a target in front of you. So it's an interesting proposition. But somewhere down the line, Pakistan will be feeling that they are about 10 runs short at this point in time. Had their score been 85, 86, the required run rate would have been somewhere less than 10. But at the moment, the required run rate is 10.6. All in all, still match on the cards if Pakistan retain the wickets at the end of the 15th over. Mohammad Rizwan has been doing exceedingly well, not out on 35. He is not running very quickly in between the wickets and walking across his single. So Rizwan must be waiting for a big innings, and Nawaz is looking very good right from the word go. But Bishnoi and Yajuvendra Chahal have been bowling exceedingly well. So it's going to be the day of the spinners. And at this point in time, with Hardik Pandya giving away 23 runs in 2 overs. So all in all, will Deepak Hooda come into bowl is another important question, or Rohit Sharma will take a risk of giving Pandya another over, and if he's expensive, maybe give Deepak Hooda another over. So in the meantime, it's going to be Chahal to start a fresh over. 2 overs for 17 runs. It's a high full toss, and welcome back Yajuvendra Chahal as Rizwan doesn't miss many of those. Takes the aerial route over the long on boundary for a 6. A good start for the over. 82 for 2. Now the required run rate is 10.2, which has come down on Yajuvendra Chahal tossing this one up, trying to flight it one, but Rizwan has no problems converting it into a full toss and getting a massive 6 of 85 meters. So good start for Pakistan in the over. That's what they want. Every over a 6 or a boundary will keep them in the hunt. India 93 for 3 at this juncture.
The quicker one from Yajuvendra Chahal at 81 kilometers per hour. So Rizwan has done all the hard work by getting the 6 of the very first ball, 41 of 29. So Pakistan fighting it out in the middle. The Indians at any point in time should not believe that they have the match in their cards. Again, outside the off stump, strikes it hard, doesn't get hold of it properly, but manages to play it wider in the field of Deepak Hooda, picks up a single. Move on to 83 for 2. 7 runs already in this over. Yajuvendra Chahal sometimes being expensive, but picks up wicket at regular intervals. And that's been the hallmark of his bowling in international cricket. Missed out on the T20 World Cup in the previous edition, but hopefully he'll be there in the scheme of things for England this time. Comes into the left-hander, so the left-right combination is good for Pakistan. You need to change your bowling aim and the line and length when you're bowling to a left-hander and a right-hander simultaneously. And if singles are taken regular intervals, the bowler will find it that much more difficult to send in his bowling as the final ball. Digs it out of the ground. Mohammad Rizwan picks up the single quickly, looking for the second run, and before the throw comes in, they complete the second run quite comfortably. A direct hit would have done the trick for India, but Virat, KL Rahul throws it from the deep, but cannot prevent the batsman from breaking up a comfortable cover. So it's been a good over for Pakistan, considering the fact there was a 6 on the very first ball. And Rizwan once again in no trouble at all, completing the second run, though it was the other batsman Nawaz running towards the danger end. 44 of 31, playing a typical innings, just the innings what Virat Kohli played at the center. Hits it hard on the ground, will not be able to find the gap. Dot ball to end the over. So at the end of 11 overs, Pakistan 86 for 2. India at this stage were 101 for 3, as the run rate again goes up to 10.67. Fakhar Zaman, the last man out, caught Kohli, bowled Chahal for 15. Yajuvendra Chahal 3 overs now means 1 for 27. Hardik Pandya 1 for 23. So interesting decision to be taken by Rohit Sharma at this juncture. Will it be Hardik Pandya for one more over? Or will there be a reintroduction of Ravi Bishnoi? Or will it going to be Harshdeep? Interesting situation for both the teams at this juncture, though the Indian team slightly ahead by 15 runs, but they had lost 1 wicket extra. Pakistan now require 54. Ball 96. So Bishnoi introduced back into the attack. 2 overs, 8 runs and 1 wicket. Outside the off stump, a quicker one to start with. Straight to Virat Kohli. The deep position, deep covers on the offside. A single result to Nawaz. He started off well, 13 of 7. Rizwan slowly getting into his elements, 44 of 32. He has to play the important role for Pakistan till the very end. Bishnoi. Will he be able to wrap up the wicket of Rizwan? Trying it on the leg side. Quick single taken. Fortunately for Bishnoi, smiles away after the delivery as Yajuvendra Chahal does well. Takes a couple of steps on the right. There was a definite boundary written on that. And Rohit Sharma also a huge sigh of relief for him as Rizwan was surprised with that one mid-lane leg stump length of Ravi Bishnoi and was not able to capitalize on that. Bishnoi goes in. Goes to Nawaz, left-hander. Quicker one, aerial route will in all probability it will cross over the boundary. Easily struck by Nawaz for a massive 6. So the Pakistan team doing it well. In the previous over of Yajuvendra Chahal, a 6 was scored. Now in this over, it's the turn of Nawaz. Takes his individual score on to 19 of 8. This match is not over. Well, the listeners also would do well not to underestimate the remaining Pakistan batting because they've got a lot of batting to come, good all-round capabilities, and the Indians will have to pick up wickets at regular intervals to not allow the partnership to blossom. It's already worth 31 now. Better delivery. Quick single taken, and again a direct hit was required at the bowler's end, but the throw came towards the wicketkeeper. And Rizwan once again makes it quite comfortably. Doesn't require the physio now. Has a slight bit of a problem, but not what we saw earlier. It's been a real seesaw battle. First match between Bangladesh and Sri Lanka 2 times ago. Bangladesh and Sri Lanka, the Group B match was a close finish. Again, the match between Afghanistan and Sri Lanka also was close.
A couple of catches dropped by the Afghanistan fielder, paving the way for Sri Lanka to do the trick in the final overs. Rizwan once again trying to set himself up, as already 9 runs has been scored in this over. That's what Pakistan requires. Keep it around 8 to 9 runs per over, and in the final analysis, even if it is 11.5 or 12, it is gettable if you have wickets in it. Comes out the crease. Good ball there by Bishnoi. Half-hearted side. Ball trickling down on the onside. And no way Rohit Sharma will take a review for that, as the ball was definitely sliding down the leg side. One more ball to go. But the Pakistani players, both Rizwan and Nawaz, have done the job for this over. They have got 9 runs already. One more ball to go. Bishnoi has one more over to go after this. Again hits it hard, but all along the ground. Will only get a single to end the over. So 3 overs, 1 made, 3 overs, 1 for 18. Bishnoi, Pakistan 96 for 2 at the end of 12 overs. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global rights holders. Well, Damodar, Pakistan on track. They are scoring at 8 runs per over. The required run rate slightly closer to 11, 10.75, but it's a good partnership building up, 33 runs. Indians will do well to pick up a wicket at the earliest. Yajuvendra Chahal, pretty expensive, 3 overs for 27 runs, but he has picked up the important wicket. And Ravi Bishnoi has picked up the important wicket of Babar Azam. Chahal picking up the wicket of Fakhar Zaman. So India require a wicket now to be in the scheme of things. बिल्कुल शंकर, आपने ठीक कहा। और यहाँ से ऐसी स्थिति में अब यह मुकाबला पहुंचता जा रहा है जहां पाकिस्तान की टीम धीरे धीरे अपनी लय में आ रही है, और जिस लय की उन्हें आवश्यकता थी। शुरुआत में उतने ज़्यादा रन नहीं बने पावर प्ले में, लेकिन अब पाकिस्तान ने 12 ओवर में 96 रन बना लिए हैं 2 विकेट पर, और उन्हें 48 गेंदों पर जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता है। अर्शदीप को वापस बुलाया जा रहा है, जिन्होंने बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी आज की है इस मैच में। 2 ओवर की बॉलिंग की है, 10 रन दिए हैं अर्शदीप ने, और उनके सामने रहेंगे मोहम्मद रिजवान, जो 46 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और अर्धशतक उनके नाम पर आने वाला है। अर्शदीप लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद यॉर्कर लेंथ, और ऐसा लगा कि गेंद पैड पर लगी, लेकिन रन के लिए जब बैट्समैन भागे हैं तो शायद बैट से लगने के बाद गई। बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे मोहम्मद रिजवान गेंद को ऑन साइड पर खेले। एक तरह से लॉक हो गए थे उस गेंद को खेलने के लिए, पर 2 रन मिले इस गेंद पर। बिल्कुल पैरों पर गेंद ऑन साइड पर टर्न करना चाहते थे। लो फुल टॉस शॉर्ट कवर्स के फील्डर के बगल से निकली, और वहां बाउंड्री लाइन से दौड़कर आए विराट कोहली। तब तक 2 रन बनाए जा चुके थे। इन 2 रनों के साथ पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा 98 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। बीच हवा में गेंद, लेकिन सुरक्षित स्थान पर मिड ऑफ को ऊपर लाया गया है। रवि बिश्नोई जब तक डीप कवर से आए बाउंड्री लाइन से दौड़कर, तब तक 2 रन विकेट के बीच दौड़कर पूरे किए गए नवाज और रिजवान के द्वारा, और ये अर्धशतक लगाया है इस मुकाबले में मोहम्मद रिजवान ने। 37 गेंदों पर 50 रन की नाबाद पारी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। पिछले मैच में भी उन्होंने 78 रन बनाए थे नाबाद, 57 गेंदों पर 136.84 के स्ट्राइक रेट से हांगकांग के खिलाफ, और ये लगातार इस एशिया कप में उनका दूसरा अर्धशतक। और जो उनके साथ बल्लेबाज हैं मोहम्मद नवाज, हमारे स्टैटिस्टिशियन जतिन सूद ने बताया कि वो पहली बार नंबर 4 पर T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये उनका 33वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है। इसी बीच अर्शदीप लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद मिड विकेट की तरफ टर्न किया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर केएल राहुल खड़े हैं, तो बड़ा स्ट्रोक नहीं आ रहा। यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो मौके मिल रहे हैं उसे वे भुनाना चाहते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, जिस पर केवल 1 रन मिला, तो 1 रन के इजाफे के साथ पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा 101, 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं 51 पर। मोहम्मद नवाज का निजी स्कोर है 20 रन, और दोनों के बीच 38 रन की भागीदारी हो चुकी है। वर्तमान रन औसत 8.08, और रिक्वायर्ड रन रेट जो रन औसत चाहिए वो 10.80। मोहम्मद रिजवान 3 मैच में 173 रन बनाए हैं भारत के खिलाफ उन्होंने, 173 का एवरेज उनका।
बार बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। एनर्जाइजिंग चौका। हर्षदीप यॉर्कर फेंकने के चक्कर में फुल लेंथ गेंद रख बैठे और यहाँ मोहम्मद नवाज ने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, बिल्कुल तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, बैक टू द बॉलर, स्ट्रेट ड्राइव। नवाज पहुंचे 24 पर। पाकिस्तान धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करने का प्रयास करता हुआ, बहुत ही अच्छी बैटिंग दोनों ही बैटर्स के बीच। साझेदारी हो चुकी है 42 रनों की। हर्षदीप सिंह 2.4 ओवर, कोई मेडल नहीं, 19 रन, कोई विकेट नहीं। युवा गेंदबाज और वहां एक बार फिर से मैदान पर गिरते हुए मोहम्मद रिजवान, तकलीफ लेकिन उसके बाद भी अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हुए हर्षदीप ओवर की 5वीं बॉल के साथ यहाँ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। भारत का स्कोर इस समय था 116 रन, 3 विकेट पर। एक और यॉर्कर लैंड गेंद, अपील करते हुए अंपायर की तरफ देखा लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर का। हर्षदीप देख रहे हैं कप्तान की तरफ, क्या डीआरएस की मांग भी करेंगे। अभी तक 2 डीआरएस बाकी है। रोहित शर्मा पूछ रहे हैं हर्षदीप से क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये डीआरएस नहीं लेंगे। और समय भी गुजरता जा रहा है, समय गुजर गया डीआरएस का। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हर्षदीप की। जैसे मैं बात कर रहा था कि वे यॉर्कर लेंथ गेंदों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं। दो विकेट के नुकसान पर अब 43 गेंदों पर 76 रन की चुनौती बाकी बची है पाकिस्तान के सामने। मोहम्मद रिजवान 51 पर 38 गेंदें खेली है। पारी के 13वें ओवर की आखिरी गेंद हर्षदीप क्या काम करेंगे। देखना है अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ जाते हैं या नहीं। बिल्कुल हाँ जाएंगे, उन्होंने सिग्नल दिया है तीसरे अंपायर की तरफ की। आप देखकर बताएं कि बैट्समैन रिजवान क्रीज के अंदर आ गए थे या नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन जिसे कहना होगा गेंदबाज हर्षदीप सिंह का। अपनी ही गेंद पर शॉर्ट मिड विकेट की तरफ जाकर फॉलो थ्रू में अपने दाईं तरफ जाते हुए गेंद को फील्ड किया और वहीं से निशाना लगाया उन्होंने। लेकिन तीसरे अंपायर को कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी क्योंकि बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। डाइव किया, अपने आप को क्रीज के अंदर लेकर आए और थर्ड अंपायर नॉट आउट। तो मुकाबले में निरंतर बनी हुई है। शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों ने रोचकता बनाई थी, उसके बाद बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाना प्रारंभ हो चुकी है। इस समय 44 रनों की और पाकिस्तान का स्कोर 107, 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद रिजवान 52 पर नाबाद, केवल 2 अतिरिक्त हैं इस पारी में। मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं 24 पर। दोनों ने जो साझेदारी की है उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस मुकाबले में वापसी करने की राह में काफी आगे आ चुका है। और हार्दिक पांड्या रुक कर एक ओवर कराया जा रहा है। अब तीसरा ओवर हार्दिक पांड्या का, 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। अब हार्दिक पांड्या का अनुभव कितना काम आता है। 41 गेंदों पर 73 रन की चुनौती पाकिस्तान के पास बाकी बची है। एक बार फिर से विराट कोहली। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के बहुत ही अहम ऑलराउंडर, बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाते हैं। मोहम्मद रिजवान 135 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं हार्दिक पांड्या सामने। हार्दिक पांड्या की गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, शरीर की तरफ आती हुई, ज्यादा तेजी नहीं थी, धीमी गेंद रखी थी, जिसे मिड विकेट खेलकर मोहम्मद रिजवान ने 1 रन जमा किया। रिजवान के खाते में 1 रन, पाकिस्तान के खाते में 1 रन। पाकिस्तान पहुंचा 110, 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं 55 पर। मोहम्मद नवाज का निजी स्कोर है इस समय 24 और दोनों के बीच जो भागीदारी है वो 47 रनों तक पहुंच चुकी है। वर्तमान रन औसत 8.25 और रिक्वायर्ड रन रेट है 10.80, बिल्कुल आसपास बना हुआ रिक्वायर्ड रन रेट। 40 बॉलों पर 72 रन। हार्दिक पांड्या इस ओवर में तीसरी बार। इस बार ओवर से ताकतवर स्ट्रोक, कवर्स बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एनर्जाइजिंग चौका, हाथ खोलने का मौका, ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। और मोहम्मद नवाज तो इस तरह से ऐसा लगता है कि एक सुंदर सा तोहफा मिल गया और उन्होंने इस गेंद को डिस्पैच किया कवर्स बाउंड्री पर बहुत ही ताकत के साथ। मिडिल ऑफ द बैट गेंद आई जिस पर 4 रन की छाप उन्होंने लगा दी और टीम के लिए
अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। 51 रन की साझेदारी दोनों के बीच हो चुकी है। मोहम्मद नवाज आ चुके हैं 28 पर। 29 गेंदों पर यह साझेदारी हुई है। इसी बीच हार्दिक पांड्या की गेंद डॉट बॉल, कोई रन नहीं बना पाए इस गेंद पर, बीट हुए। मुकाबले में रोचकता भर दी है इस 51 रन की साझेदारी में ने, जो केवल 29 गेंदों पर की गई है। हमारे स्कोरर राजेश अरोरा ने यह जानकारी दी। मुकाबला बहुत कड़ा होता जा रहा है और हमेशा ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है वो इसी तरह से कांटे का मुकाबला होता है। भारत 7 बार का एशिया कप का चैंपियन, लगातार 3 बार खिताब जीत चुका है। 1988 में बांग्लादेश में, 1990-91 में हमारे देश में कोलकाता में, और 1995 में यूएई में भारत ने ये खिताबी जीत हासिल की थी। इसी बीच पुल शॉट ऑफ लेंथ गेंद बैट के ऊपरी एक हिस्से से लगने के बाद विकेट कीपर के पीछे 4 रन। आरईसी एनर्जाइजिंग चौका। तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद। इस ओवर में दूसरा चौका आया है। हार्दिक पांड्या, आज का दिन नहीं है शंकर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और इस बार फुल शॉट, टॉप एज, विकेट कीपर कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी जगह पर गेंद गई। और यहाँ आवश्यकता है पाकिस्तान को अपने रन रेट को आगे बढ़ाने की, और वही कर रहे हैं। 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर। और हार्दिक पांड्या का ये तीसरा ओवर महंगा होता हुआ। इस बार एक सिंगल रन मिलेगा। 14वां ओवर पूरा हुआ। 119 पे 2 भारत का पाकिस्तान का स्कोर। कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर शंकर परेशानी के जो क्षण है, परेशानी की जो बात है वो स्पष्ट नजर आने लगी है। Absolutely, we are talking about Hardik Pandya. 3 overs and 35 runs. Will that be the difference between the two teams? But still, one more over to go, and in all probability, Hardik Pandya only will complete those 4 overs, and Deepak Hooda might not be brought into the attack at all. Rizwan on 55, but the pick of the batsman, Nawaz, has taken over. Rizwan, one can say, is playing a gem of an innings. 33 runs in very quick time. And 33 of just 15 balls, says our scorer Rajesh Arora, which indeed makes good reading, a very good cameo. And now India definitely require a wicket. Rizwan 55 of 41, Nawaz in belligerent mood 33 of 15. Now they require 63 of 36 balls. 119 for 2. Match poised for an interesting finish. Chahal, will he be able to get the breakthrough what India want as he gets ready to bowl from the DSC end? A statistician, Jatin Sukh, says that this 33 not out is the highest score from Mohammad Nawaz in T20s. His previous best was 30 versus West Indies at Karachi in 2021. So, grabbing the opportunity with both the hands, Nawaz making no mistake, Mohammad Nawaz. And on the contrary, remember Rizwan, this is the second 50 for him against India, and the first 50 Pakistan had won. And now the second 50, you never know. Again takes the aerial route. We'll have to wait and see whether he hits it properly. Yes, bisecting the gap. Boundary to start the over for Mohammad Nawaz. 4 runs. REC energizing chauka. So Chahal replacing Hardeep. Good start for Pakistan in the over. They now require 59 of 35. We were talking about 12 runs per over in the final 4 or 5 overs is gettable if you have wickets in hand. And that's what Pakistan did. They had the opportunity, scoring just 76 runs in the first 10 overs compared to India's 93. But after 10, different team altogether. And these two batsmen have got the momentum in their favor. Another boundary goes for Pakistan. REC energizing chauka. Back-to-back boundaries. Will this be the match? The innings of the match. 41 of 17, Mohammad Nawaz. 2 back-to-back boundaries. Chahal also off colour today. Has already conceded 35 runs in 3.2 overs. This was the over considered to be the breakthrough over, but that has not happened. And these two batsmen now will understand that they are in the driver's seat. The run rate now falling below 10 for the first time. Strike rate of 241. Mohammad Nawaz. 241 strike rate. Striking it hard. It takes reverse flick. They'll pick up a single looking for the second run. But a smart piece of fielding by Arshdeep in the deep as Pakistan move on. At this juncture,
Pakistan look to be favorites to win this encounter quite easily because both Pandya and Chahal not able to cut the run flow, particularly Hardik Pandya, 3 overs and 35 runs, and the Chahal bowling his final over, the last 3 balls in his spell. Will he be able to pick up a wicket? A wicket is definitely required for India. Waits for the ball to turn, and this time finds the gap. The ball is going towards the boundary. Will it cross the boundary? It's 4 runs. REC energizing chauka. They say you target a new bowler, a new rookie bowler, but Chahal, the most experienced in the bowling mix, conceding, and this could be the game-changing over for Pakistan. Looks like that Chahal already conceding 40 runs, so 3 boundaries in this over, and this has brought the run rate up to 9 for Pakistan, and the required run rate has come down to 9.38. Still 2 more balls to go. Partnership worth 69 of 36. Pakistan doing it in style. India now require not just 1 wicket, they require 2 wickets. Because the partnership has been so good for Pakistan. Comes out of the crease, places it on the onside. They will definitely look for the second run as the ball is hit deeper into the ground and the throw comes towards the wicket-keeper's end. But the 2 batsmen have no problems at all completing the second run quite comfortably. Right from the word go, Mohammad Nawaz has been pretty belligerent this over already. 15 runs. India did not get any of these 15 plus runs over in the final 5 overs, and that's the reason why India were not able to reach 200, which was very much on the cards after getting 93 in the first overs. Now, in comparison, the difference between the 2 teams just 1 run. And Pakistan has the advantage because they have a score in front of them, and 2 of the Indian bowlers are not in great form. Chahal, final ball. Will this be a wicket for India? Will it turn the table? Goes in and bowls, covers of the crease and places it on the onside. Rizwan will not take the second run, so it's been a good over for Pakistan. 135 for 2 after 15 overs. Chahal's spell comes to an end. 4 overs for 43 runs. So Chahal and Pandya not in their elements today, though Chahal picked up the all-important wicket of Fakhar Zaman pretty early, but Mohammad Nawaz 42 and Mohammad Rizwan 62 doing it for Pakistan. It looks to be an easy task for Pakistan in the final 5 overs. We were talking about the dew factor. Maybe Yuzvendra Chahal is not able to clasp the ball the way he wanted because of the dew factor. Well, time will tell as Rizwan gets some treatment. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से सही तरह से ग्रिप में शायद बॉल नहीं आ पा रही है, और यहाँ रिजवान जो घायल हो गए थे जब वे फील्डिंग कर रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने आज जिस तरह से किला लड़ाया है, ये लंबे अरसे तक याद किया जाएगा. अब भुवनेश्वर कुमार को वापस लाया जा रहा है और भारत की जो गेंदबाजी है अब चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही है कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि जिस ओवर में लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या को, उस ओवर में पाकिस्तानी बैटर्स बहुत अच्छे रन बना लेते हैं. And not just Hardik Pandya, even Yuzvendra Chahal. In fact, he gave more runs than Hardik Pandya. It was expected that Chahal will, but you never know with the leg spinners, they tend to go for runs, but when they pick up wickets, they look good. But not today. Bhuvaneshwar Kumar, will he be the man to pick up a wicket and bring back India into the game? Otherwise, Pakistan walking away quite easily and doing it in a total professional way. Not quite perturbed at the end of 10 overs. Only 76 were scored. Still another 110 was required, but then now have played exceedingly well after the 10th over. Bhuvaneshwar Kumar replacing Hardik Pandya. Will bowl to Rizwan, not out on 62. Mohammad Nawaz, 42 of 18 is out. Wide outside the off stump, and Rizwan has no problems bisecting the gap on the offside. But there is protection in the sweeper cover in the form of KL Rahul. Only a single tackle. 182 the target. And Pakistan doing it in style. If Pakistan manage to win this encounter, they will be in a much better frame of mind to reach the final, as India then will have a lot of pressure to win the remaining matches. As Mohammad Nawaz has been definitely grabbing the opportunity with both the hands given to him. 42 of just 18. That's been the game changer.
One can straight away say, though Mohammad Rizwan batting utility cannot be ruled out at all. 46 of 29. Bhuvaneshwar Kumar to bowl to Nawaz. Again, a slow one, a testing delivery. Rizwan was Mohammad Nawaz, in fact, the left-hander, caught unawares with that 121 kilometers per hour delivery. So Bhuvaneshwar will have to mix it up with, and the Indians will do well bowling a lot of slower deliveries, because we have seen even when the Pakistani bowlers were bowling, the balls which were delivered with tremendous amount of speed were dispatched to the boundary with disdain by the batsmen. And similarly, Hardik Pandya's bouncers not quite working today. Mohammad Nawaz waits for the next one. Takes the aerial route. Will this be the wicket India is looking for? Skewing it in the deep and straight into the waiting hands of Surya Kumar Yadav. And that is the end of Mohammad Nawaz. So India pick up a wicket, but will that be enough? Is it too much too late? You never know. Another wicket here will definitely pull things back into Indian favor. But 46 of 27 is quite gettable with 7 wickets in hand. But nevertheless, some respite for the Indian supporter as he was invited. Another slower one from Bhuvaneshwar Kumar. Deepak Huda it was. Surya Kumar Yadav was also running towards Deepak Huda. But finally it was Deepak Huda taking the catch and Bhuvaneshwar Kumar providing the vital breakthrough which India required. And Deepak Huda showing the thumbs up sign. Well, Mohammad Nawaz got Huda, bowled Bhuvaneshwar Kumar for 42, but very well. Will this be the match winning innings? 42 of 20. बिल्कुल 20 गेंदों पर 42 रन बनाना और ऐसे समय पर जब आपकी टीम परेशानी में फंसी हो, ये बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया है। इस समय बल्लेबाज जो आउट हुए हैं मोहम्मद नवाज ने, उन्होंने बहुत अच्छा साथ निभाया अपने सीनियर पार्टनर मोहम्मद रिजवान का। जैसा इसके पहले भी जतिन सूद ने हमें बताया था कि मोहम्मद नवाज पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के करियर में नंबर 4 पर बैटिंग के लिए आए हैं। ये उनका 33वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है और आमतौर पर वे नंबर 7 या नंबर 8 पर बैटिंग के लिए आते हैं और केवल एक बार नंबर 3 पर वे बैटिंग के लिए आए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ और वहां उन्होंने केवल 7 रन बनाए थे। The new batsman in is Khushdil Shah, 16 matches, not a very healthy average, just of 25. So if India can pick up another wicket here, definitely Pakistan will slightly be on the back foot, but with 7 wickets in hand, still Pakistan are favourites to wrap up this match. India would do well as Rohit Sharma has a problem on cards because 1 over will have to be bowled by Hardik Pandya. Arshdeep has bowled well, so it will be the combination of Bhuvaneshwar Kumar and Arshdeep, and Hardik Pandya will have to bowl his final over well. In the deep, Deepak Huda just inches before the boundary line. The shot was miscued by Mohammad Nawaz, but not before doing the damage. 42 of 20. Again, the ball quick single taken by and Bhuvaneshwar Kumar has picked up 28 wickets so far in his T20 career. Rohit Sharma slightly the language of Indian fielders changing after that wicket of Mohammad Nawaz, who was taking the game away from India. As long as Mohammad Rizwan, the man on the captain. On the ball, good ball there, back to back. Back to the bowler, no run result, dot ball. So just 2 runs so far in this over. And Bhuvaneshwar Kumar once again proving why he is a player who has to be in the 11 in the scheme of things for India if he is fit. So if Jasprit Bumrah comes back, in all probability, Jasprit Bumrah and Bhuvaneshwar will open the bowling for India in the World Cup. As for the final time in this over, and 1 more over to go after this. He strikes it hard. The ball is going towards the long on boundary. Will it reach the boundary? It doesn't. Smart piece of fielding in the deep by Deepak Huda again, restricting and saving 2 runs for his team. So at the end of 16 overs, Pakistan fighting it out, 139 for 3. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global rights holders. So it's been a good over for Bhuvaneshwar Kumar. 3 overs, no wins, 1 for 21. And now Damodar, the run rate required is gone up to 10.75. Another 6 or 7 run over at this juncture will bring back India into the match. बिल्कुल और जो 4 बॉलर्स हैं, अब जो 4 ओवर बचे हैं उनके एक जरूर आया है शॉर्ट वाइडिश में डाउन की तरफ जब तक गेंद गई। विकेट के बीच लगातार दौड़ भी रहे हैं मोहम्मद रिजवान, तारीफ करनी होगी उनकी।
घायल होने के बावजूद एक घायल शेर की तरह बैटिंग कर रहे हैं। 36 रन की जरूरत है, 21 गेंदें बाकी हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 10.3। पाकिस्तान 146, 3 बल्लेबाजों के नुकसान पर। पारी का 17वां ओवर रहा है। कश्मकश, सभी की निगाहें मुकाबले पर लगी हुई। पूरा स्टेडियम इस समय रोमांचित है इस आकर्षक और संघर्षपूर्ण मुकाबले को देखते हुए। हार्दिक पांड्या इस ओवर में चौथी बार ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही निकल आए थे। वहां मोहम्मद रिजवान तो गेंद की दिशा भी उसी तरह रखी। मोहम्मद रिजवान अंपायर की तरफ देख रहे हैं कि इस गेंद को वाइड डिक्लेयर किया जाना था। पीछे से ऋषभ पंत भी आए तो उनसे भी वे कह रहे हैं कि ये वाइड होनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर का निर्णय सर्वोपरि। बहुत ज्यादा आगे आ गए थे निकल कर, और शायद इसी वजह से हम 4 गेंदें फेंकी गई हैं इस ओवर में। 7 बने हैं, 1 चौका लगा है, 2 गेंदें और बाकी। 182 का लक्ष्य, उसके सामने पाकिस्तान 146, 3 विकेट पर। हार्दिक की गेंद इस बार बहुत ही ज्यादा बाहर, खेलने की कोई कोशिश नहीं की और शायद ऐसा लगता है कि हाथ से छूट गई है गेंद। और इसी ड्यू फैक्टर की बात की जाती है कि जब बाद में आप बॉलिंग करते हैं ऐसी कंडीशन में, तो गेंद आपके हाथ में अच्छी तरह से ग्रिप नहीं रह पाती और ऐसी स्थितियां आपके समक्ष उत्पन्न हो जाती हैं। इस वाइड के साथ पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा 147, 3 विकेट गिरे हैं। मोहम्मद रिजवान की एक और जुझारू पारी इस एशिया कप में देखने को मिल रही है। उनके साथ हैं खुशदिल, 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। 11 रन की भागीदारी हो चुकी है। 8.82 रन प्रति ओवर का औसत इस समय बल्लेबाजी में पाकिस्तान का। एशिया कप सुपर 4 का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गवाह बनता हुआ इस शानदार संघर्षपूर्ण मुकाबले का। इस बार धीमी गेंद इनसाइड आउट, लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद हवा में और सूर्य कुमार यादव के हाथ में। पारी समाप्त हुई मोहम्मद रिजवान की। जिस विकेट की तलाश थी भारत को, आखिरकार हार्दिक पांड्या ने वो विकेट दिलाया। धीमी गेंद रखी हार्दिक पांड्या ने, इनसाइड आउट गेंद को खेलने गए थे मोहम्मद रिजवान। स्ट्रोक भी बहुत बढ़िया था, लेकिन जो गेंद की गति धीमी थी उस कारण से गेंद को सही तरह से मैदान के बाहर नहीं पहुंचा पाए। बैट के निचले हिस्से में गेंद लगी और कोई गलती नहीं की वहां लॉन्ग ऑफ पर सूर्य कुमार यादव ने। बहुत ऊंची गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा कैच। और ये कैच शायद इस मैच के परिणाम को लिख दे भारत की तरफ, क्योंकि अभी तक जैसे जैसे रन बनते जा रहे थे परेशानी आ रही थी। मोहम्मद रिजवान कॉट, सूर्य कुमार यादव बोल्ड, हार्दिक पांड्या आउट होने के पहले 71 रन बनाए, 51 गेंदों का सामना किया। और हमारे स्कोरर राजेश अरोरा बता रहे हैं कि ये एक और अर्धशतक इस टूर्नामेंट में। पिछले मैच में भारत के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने 43 रन बनाए थे और उसके बाद जो हांगकांग के खिलाफ मैच खेला था उन्होंने अपने ग्रुप ए में, उसमें 78 रन की नाबाद पारी खेली थी। तो इस प्रकार इस मुकाबले में अभी भी निर्णय की संभावनाएं बदलती जा रही हैं। आसिफ अली आए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय, 42 मैचेस में 444 रन, स्ट्राइक रेट 134, 41 उनका सर्वाधिक स्कोर। 35 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 19 गेंदें बाकी बची है और क्या हार्दिक पांड्या का ये ओवर इस मैच का निर्णायक ओवर होगा? पाकिस्तान 147, 4 विकेट के नुकसान पर। राजेश अरोड़ा से हम जानना चाहेंगे कि इस समय क्या पोजीशन थी दोनों टीम की? 17 ओवर में कितने रन बने थे भारत के? 1 रन से आगे है इस समय पाकिस्तान। हार्दिक पांड्या की गेंद ऑन साइड पर, शॉर्ट मिड विकेट पर रनआउट का मौका, लेकिन स्टंप पर गेंद नहीं लगी। एक स्टंप वहां से नजर आ रहा था जिस जगह से कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया था। यदि ये गेंद स्टंप पर लग जाती तो शायद एक और विकेट भारत को मिलता। 17 ओवर का खेल पूरा, 4 विकेट पर 148 रन पाकिस्तान का स्कोर। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है, संघर्षपूर्ण होता जा रहा है और क्रिकेट अपनी तमाम ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच हो तो उसका तो क्या कहना, उसमें कितने रंग भर के निकलते हैं, कितने रंग उभरते हैं, ये कोई नहीं कह सकता। एक समय जब भारत ने 181 रन बनाए थे तब ऐसा लग रहा था कि भारत 200 से ज्यादा बनाना था, भारत को 200 से ज्यादा रन बनाने थे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने पारी शुरू की तब ऐसा लग रहा था कि भारत आराम से इस मैच को जीत जाएगा। लेकिन अब 17 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर है 148, 4 विकेट के नुकसान पर। रवि बिश्नोई को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए।
और यहाँ मौका था रवि बिश्नोई के पास, अंडर आर्म थ्रो उनका स्टंप पर नहीं लग पाया। स्टंप पे लग जाता रोहित शर्मा ने भी बिल्कुल ऐसा माना कि गेंद स्टंप पर लगनी थी। नए ओवर की शुरुआत बिश्नोई, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन आया और ऐसे समय पर ये अतिरिक्त रन आपके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। बिश्नोई 3 ओवर की बॉलिंग, 19 रन 1 विकेट। कुछ देर डॉट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही बढ़िया गेंद, गुड लैंड पिच होने के बाद थोड़ा सा ऊपर उछलती हुई, और जिस तरह से भारत ने वापसी की है, शायद ऐसा लगता है इस विकेट को निकालकर अब यहाँ से भारतीय गेंदबाजों को, क्षेत्र रक्षकों को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी ये मुकाबला भी जीत पाएंगे। बिश्नोई राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार आखिरी समय पर गेंद को गाइड किया थर्ड मैन की तरफ, लेकिन शॉर्ट फाइन थर्ड मैन पर अच्छी फील्डिंग। 2 प्लेयर वहां पर हैं, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन, दोनों के बीच से गैप में गेंद को खेला था, पर गेंद 30 यार्ड सर्कल के अंदर रुकी। 1 रन आया। कुछ दिल पहुंचे 4 पर। आसिफ अली आए हैं अब नए बैटर, सामना करेंगे रवि बिश्नोई का। आसिफ अली राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, 1 अक्टूबर 1991 को फैसलाबाद में जिनका जन्म हुआ और पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला T20 का उन्होंने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला था 1 अप्रैल 2018 को, और पावर हिटर के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। 41 मैच में 444 रन, और आज क्या पावर हिटिंग का मुजाहिरा वे कर पाएंगे या नहीं। बिश्नोई की गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन, लेग स्टंप के बाहर, वाइड, एक और वाइड, और यहाँ पर यही दिक्कत है। रोहित शर्मा भी निराश है इस तरह की बॉलिंग से कि आप तो ये क्या कर रहे हैं ऐसे समय पर। 2 वाइड गेंदें इस ओवर में। विकेट के पीछे रोहित ऋषभ पंत कॉर्ड बिहाइंड की हल्की सी अपील कर रहे थे, और DRS की मांग की गई है या नहीं की गई है ये देखना है। स्ट्राइकिंग एंड पर हैं आसिफ अली, और DRS ले लिया है। देखना है कि क्या निर्णय आएगा। लेग स्टंप के बाहर, और ऐसा यहाँ से लग रहा है रुचिरा पल्लिया गुर्गे जो थर्ड अंपायर है, उनका डिसीजन देखना है। और सभी की निगाहें इस समय बड़े से स्क्रीन पर लगी हुई जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर लगा हुआ है। लगभग 25,000 के आस खेल प्रेमी इस मुकाबले को देखते हुए। रिव्यू भारत का ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट है, और तीसरे अंपायर के निर्णय के बाद ये पता चलेगा कि ये विकेट गिरा है या नहीं गिरा है। क्या बैट पे गेंद लगने के बाद विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई है या नहीं गई है। इस समय स्कोर है 151, 4 विकेट के नुकसान पर आसिफ अली के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है। और बहुत ऐसा लगता है कि महीन सा बैट पर बॉल टकराया था, और जो अल्ट्रा एज में समझ में आएगा, जो नई नई तकनीकें खेल के साथ जुड़ती जा रही हैं, उसका जो मुख्य काम है वो यही है कि पारदर्शिता बढ़ाई जाए निर्णय के प्रति, क्योंकि बहुत तेज खेल होता है, बहुत तेज गेंद निकलती है। तो ऐसे में तकनीक का यदि आप इस्तेमाल करें तो परिणाम को आपको पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका कोई ज़्यादा असर न हो। और दोनों ही देशों के समर्थक इस समय स्क्रीन पर टकटकी बांधे देख रहे हैं कि यह निर्णय किसकी तरफ आएगा। भारतीय समर्थक भी प्रसन्न है, जिनके चेहरे पर मुस्कान है, और यहाँ पाकिस्तान के समर्थक थोड़ा सा चेहरे उनके निराश। और यहाँ मैदान पर ऋषभ पंत, कप्तान रोहित शर्मा, रवि बिश्नोई सब एक जगह पर खड़े हैं। बहुत महीन सा ऐसा लगता है कि अल्ट्रा एज में गेंद बैट पर लगी है, लेकिन वो तो सब कुछ हाथ में है इस समय। टीवी अंपायर रुचिरा पल्लिया गुर्गे के, श्रीलंका के हैं रुचिरा पल्लिया गुर्गे, जो इस मैच के टीवी अंपायर हैं। रिजर्व अंपायर हैं अहमद शाह पख्तीन अफगानिस्तान के, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे से, और इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के और रविंद्र विमलासिरी श्रीलंका के। तो बहुत रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर यह मुकाबला, जिसमें कॉर्ड बिहाइंड की अपील के लिए भारत ने रिव्यू लिया है। 2 रिव्यू दोनों टीमों को 2-2 रिव्यू मिलते हैं, और भारत ने ये रिव्यू लिया है।
भारतीय खिलाड़ियों के और समर्थकों के चेहरे पर प्रसन्नता है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 में सुपर 4 स्टेज का मुकाबला। दोनों टीमों का ये सुपर 4 स्टेज का पहला मुकाबला है और इस समय निर्णय के नजदीक ये है मुकाबला। पिछला विकेट 147 पर गिरा था। इस समय पाकिस्तान का स्कोर है 140, 4 विकेट के नुकसान पर। आसिफ अली के खिलाफ ये अपील की गई है। अंपायर बहुत कुछ देख रहे हैं, रुचिरा पल्लियागुरुगे, क्योंकि उनके डिसीजन के साथ यदि उनका डिसीजन रेड लाइट जलती है तो भारत के लिए खुशियां आएंगी, और यदि ग्रीन लाइट जलती है तो पाकिस्तान के समर्थक और खिलाड़ी प्रसन्न होंगे। Well, it will be a very difficult decision to make for the umpire because there is this faint flicker on the glove, but will the benefit of doubt be given to the batsman, or is that sneak enough? The sneakometer tip is enough or not? We'll have to wait and see. So India review, the original decision is not out, and Pakistan 150 for 4. Still they have 6 wickets in hand, but the point is that 2 new batsmen are there. Kushtil not out on 4, Asif Ali not out, yet to get off the mark, and there is a slight deflection in the ultra edge. We'll have to wait and see whether the decision will go in favor of it, and they have ruled it not out. So as the decision stands, the benefit of doubt given to Pakistan. The Indians can't believe, and the Pakistani fans in the stadium, a huge sigh of relief for them. And Rishabh Pant and Rohit Sharma arguing with the umpire that indeed this decision is questionable. Definitely it's a questionable thing because there has been a definite flick in the ultra edge, and Rohit Sharma again and again trying to convince the umpire that there was, and now the thumbs up has been shown towards the umpire that the decision taken by him on the ground is the final. So 151 for 4, Pakistan stay in the hunt. तो दिलों की धड़कनों को रोकने वाला ये डिसीजन हो गया था। रवि बिश्नोई, अगली गेंद इस बार हवा में, देखना है फील्डर गेंद के नीचे है या नहीं, और ये आसान सा कैच था, अर्शदीप ने छोड़ दिया, उनके हाथ से छिटक गया, और शायद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी, बल्लेबाज को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना आसान सा कैच उनका छूट जाएगा। पॉइंट पर खड़े थे अर्शदीप, कैच को बहुत आसान उन्होंने बनाया और सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि ये कैच हो गया, क्योंकि इतना आसान कैच शायद इस तरह के महत्वपूर्ण मुकाबले में आपके पास नहीं आएगा। उसे और ज्यादा इजी बनाया। 151 पे 4। बिश्नोई के ओवर में एक और वाइड बॉल। मुकाबला बहुत ही रोमांच के शिखर को स्पर्श करता जा रहा है। अर्शदीप ने जिस तरह से कैच लेने की कोशिश की, शरीर से दूर हाथ थे, यदि बॉडी के नजदीक रखते तो शायद और आराम से इस कैच को लपक सकते थे। शायद आसान बनाने की कोशिश थी, जिस कारण कैच छूट गया। 17.3 ओवर, 152, 4 विकेट। रवि बिश्नोई की ये गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के से पुश किया अर्शदीप की तरफ और नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ निशाना लगाया अर्शदीप ने। और यही दबाव झेलने वाली बात है कि आप इस तरह के मुकाबलों में किस तरह से इस दबाव को झेलने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रेशर हैंडल करेंगे उतने ही आपके जो परिणाम है आपके पक्ष में आएंगे। इससे एक सिंगल के साथ पाकिस्तान 153, 4 विकेट के नुकसान पर। और ऐसा ही हुआ था जब भारतीय पारी चल रही थी, तो अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके भारत को भी ऐसे ही मिले थे। 14 गेंदों पर 29 रन की आवश्यकता। बिश्नोई की गेंद खुला लैन, हल्के हाथ से गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला और तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया। सही तकनीक, सही निर्णय है दोनों खिलाड़ियों का। 2 रन के इजाफे के साथ पाकिस्तान पहुंचा 155 पर। 17.5 ओवर के बाद 155, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर पाकिस्तान। 3.5 ओवर में केवल 25 रन देकर 1 विकेट लिया है रवि बिश्नोई ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए इस युवा गेंदबाज की उतनी कम है। अपने कोटे के रवि बिश्नोई, बाएं हाथ के बैटर उनके सामने खुश दिल के लिए हाफ वाली बनाकर ड्राइव किया, मिडिल और लेग स्टंप की गुडलैंड बॉल को। 1 रन पूरा किया। हार्दिक पांड्या है डीप मिड विकेट पर फील्डर।
2 बाउंस के बाद विकेट कीपर के 5 रन का स्कोर। 18 ओवर पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 156 रन। तो शंकर, जिस तरह से पिछले ओवर में परिस्थितियां हुई है, बहुत देर तक खेल रुका भी रहा, उसके बाद थर्ड अंपायर का निर्णय, जिसमें ऐसा लग रहा था कि भारत के पक्ष में वो निर्णय जाएगा, वो नहीं हुआ और अगली गेंद पर कैच छूटा। तो ये जितना भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले चलते हैं, उसमें ये सब घटनाएं होती रहती हैं। और आज भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एशिया कप के सुपर 4 के मैच में वो घटना घट गई। Yes, indeed. But Rohit Sharma and Rishabh Pant were not happy with the umpire's decision. There was a light deflection in the ultra edge. But in the next ball itself, they got an opportunity. And did Harshdeep drop the match? We'll have to wait and see. As we'll have to, the 2 boundaries scored of the last 2 balls, will that be the difference? Or will the drop catch of Harshdeep will be the difference? Only time will tell. 156 for 4, 13 runs required of 2 overs, so 2 good overs now. Arshdeep will have to make amends by bowling his final over in the right way. But he'll be bowling the 20th over as Bhuvaneshwar Kumar bowling the 19th over, 26 required of 12. Match going down to the wire. Easy catch dropped, short rising, starts off with a wide. We'll have to wait and see. Yes, indeed. And in the previous over, Bishnoi gave away 3 wides, though no boundaries were scored of the previous over. But here, Bhuvaneshwar Kumar starts off with a wide, and now with 1 over behind, the fielding restrictions again will come into play, and with India will have to play with one fielder shot within the outside the circle. It's 157 for 4. Here is Bhuvaneshwar Kumar. Hits it very well bowled, yocking the left-hander. Nevertheless, the manages to help himself with a single. The ball going towards the mid-on area. And it's good for Indian team that the 2 new batsmen, relatively new batsmen, Asif Ali and Kushdil are there. Kushdil, though, is not out on 8. And the partnership worth 11. Current run rate 8.7. It's over. This over will probably decide. And Arshdeep will definitely must be at the back of his mind under extra pressure because of the drop catch, and that should not tell on his board. 158 for 4. Rohit Sharma marshalling his resources. Virat Kohli, slight bit of a problem with him while fielding, is in the dugout. So the experience of Virat Kohli being missed in the field. 24 of 11. Comes out of the crease, takes the aerial route, and that's the shot which was required. Easing the pressure, making no mistake. Comes out of the crease, to the right of the crease, and takes the aerial route and picks up a 6-er. So Bhuvaneshwar Kumar, who picked up a wicket, and that's what happens when you drop a catch. The easy catch which was dropped. So Asif Ali was dropped in the previous over, saying, "Thank you very much, Arshdeep. I'm going to hit for a 6 of Bhuvaneshwar Kumar." So the pressure to fully reduce again outside the off stump, comes out of the crease and looking towards the umpire for a wide. Yes, the umpire declines, but again, a difficult decision on the bowler, one can say. The batsman had moved prior to the ball being delivered. Virat Kohli and the Indian supporters can't believe this. Being called a wide. So nothing going right for India. He had already moved and it was bowled wide outside the off stump, and still it was declared wide, which probably Bhuvaneshwar Kumar is shocked with the decision of the umpire. A lot will be discussed at the end of the match because this is the second time India is on the receiving end. Again, it was a wide, but a smart piece of fielding there. Otherwise, the ball would have trickled down to the boundary. The batsman there bringing his bat in the way of that wide delivery. This was a definite wide. So Bhuvaneshwar Kumar doing it well, bowling slow deliveries, pitching outside the off stump, not getting it right. Probably the dew factor coming into account, but Yajwendra Chahal making amends, saving at least 3 runs for his team. 16 runs required of 9. The dew factor coming into play. The bowlers are not able to hold the ball at the right way. As 166 for 4 now. Pakistan requires another 16. Short rising delivery, ball in the air. Will it go into straight into the waiting hands? No, it doesn't. The ball crosses over.
So it looks that the final over will only be a formality for Pakistan as the second six of the over comes up. And Bhuvaneshwar Kumar, there being guilty of pitching it short, was bowling so well, and the batsman had no problems at all dispatching it over. Just falls within the boundary line. It's only a 4. REC energizing chauka. So Pakistan now at the threshold of a famous victory, thanks to the drop catch of Arshdeep, an easy catch it was, and also to a certain extent an umpiring decision which probably should have gone India's way, but the benefit of doubt was given to the Pakistan batsman. So 12 now required of 8 balls. That was the boundary, and the final 2 more balls to go in this over. Yorker 1 picks up a single. No pressure at all for Pakistan. Now the required 11 of 7. These two batsmen are doing it in style. Asif Ali thanking the Almighty for the drop catch of Arshdeep, who will be bowling the final over. Kushdil not out on 13. 18.5 overs, 8 extras. The final ball, an important ball in the perspective of the match. They should not go for a boundary or a 6. Otherwise, whatever Arshdeep does, it will be easy for Pakistan. Will it be a dot ball? Will it be a wicket? Comes out of the crease, takes the aerial route. Will it be a 6? We'll have to wait and see. And the ball doesn't go to... It goes to the boundary for 4. REC energizing chauka. So the turning over has been Bhuvaneshwar Kumar, who was the pick of the Indian bowlers, but conceding 19 runs in the 19th over. And that was the difference between Pakistan bowling and Indian bowling. The Indian bowling at the death has been found wanting, and a lot of homework needs to be done for the Indian death bowling, particularly Bhuvaneshwar Kumar giving away 19 runs. And now 26 runs were required of the final 2 overs, and penalty of one fielder also. But even then, couple of sixes scored. The penalty didn't work much also, but the 4 which came now is because of the penalty imposed on the Indian team. So one fielder shot in the deep, doing the trick for Pakistan. So 1 over behind as the innings timer on the giant scoreboard showing it very clearly. So it's been a real anticlimax end for the Indian team. You need to watch out for your timing for bowling, and 7 runs required of 6 balls. So it's in all probability, until and unless a miracle happens, it's going to be Pakistan. We have seen on numerous occasions miracles happening, but miracles do not happen every day. And Arshdeep, who dropped a sitter, will have to be blamed to a certain extent. But nevertheless, these are part and parcel of the game. India got a gift in the form of 8 runs of the final 2 balls. So in the context of the game, it's been a professional approach in the final overs by Pakistan. They never lost hope. India, on the contrary, in the final 4 overs, were not able to get the type of result which they wanted to. And Bhuvaneshwar Kumar's 19-run over. Arshdeep Singh, will he be the hero on the day after dropping the catch? Goes in and bowls. Good ball there. A single taken. So Arshdeep, just like Jasprit Bumrah, is known to bowl Yorkers, but the final ball of Bhuvaneshwar Kumar should not have gone for a boundary. Then Indians would have been in a much better frame of mind. So hero of 2020 after this over. Please listen to the program on All India Radio with our moderators Amit Arora and Sakshi Manwal, and with our experts Jaya Sharma and G. Rajaram. Arshdeep walking back slowly to the top of his bowling mark. Bhuvaneshwar Kumar, nobody expected him to concede 19 runs after doing such great work. In the first 3 overs, just conceded 21, but in the final over 19. Indians must not lose hope. A wicket here can bring back a little bit of interest in India's favor. A wicket is what is required, or a dot ball. Either of the two will be the tonic for India. Pakistan 176 for 4. Rohit Sharma still marshalling his fielders, but probably at the back of his mind, the drop catch of Arshdeep will definitely be playing in the minds, because that would have been a dot ball and a wicket also. Field is now closing in on with 1 over shot. 1 extra fielder will have to be inside the circle. 1 fielder shot outside the circle. Ball is going towards the boundary. 4 runs. Looks like it's all over for India.
has no problems at all. Asif Ali, after being dropped, taking advantage of this and doing it in style of the same Arshdeep, the bowler who dropped the catch of Asif Ali. It's almost converting that Yorker, missed it on that occasion. Arshdeep Singh, the Yorker one, and that was it, converting it into a full toss for 4 runs. .31 the run rate now. The required run rate has come down to 3. Asif Ali taking advantage, making amends of the drop catch of a poor shot he played off the bowling of Ravi Bishnoi, and Arshdeep dropped his sitter. 180 for 4. Still 4 more balls to go. Still discussing with Rahul and Rohit Sharma, and probably it will be a learning curve for Arshdeep. 180 for 4. So after this match getting over in the next couple of minutes or so, do not forget to listen to the program Hero of the 2020 with our moderators Amit Arora and Sakshi Mulwal, and experts Jaya Sharma and Dev Rajaram. Probably India is looking to restrict, at least get a couple of dot balls. And as I said earlier, only a miracle can save India from here, and miracles do not happen every day. Arshdeep dropped a catch, a sitter of Asif Ali. But at the same time, an Indian fan will forget that they got bonus 8 runs of the last 2 balls. So that's how the thought process of a cricket fan goes in. But nevertheless, Pakistan has been more professional and bowled the final overs much, much better than India. Bhuvaneshwar Kumar conceding 19 runs in the 19th over. India, on the contrary, were not able to capitalize in the final 5 overs, and that proving to be the difference between the two teams. Indians will have a lot of homework to do to bowl in the final death overs. Arshdeep goes in and bowls, and straight to the fielder there. A dot ball result. And that's been the hallmark of every India-Pakistan match. You cannot get up from your seats until and unless the last ball is bowled in the match. But at the moment, Arshdeep doing it well. The tutoring by Rohit Sharma and KL Rahul working as Arshdeep bowled a dot ball. 2 required of 3. Pakistan 180 for 4. Target 182. Another dot ball here or a wicket will again keep Indian hopes alive. Will Arshdeep be able to deliver, make amends for the drop catch, what he did in the over of Ravi Bishnoi in the 18th over? The Indian spectators wiped in the ground. The nail biter once again. Arshdeep goes in and bowls, and the Yorker there rubbing him on the pad, and he's out. That's what we were talking about. Arshdeep has done this on numerous occasions. Takes the DRS. If there is no bat involved in this particular bat from the batsman, then certainly it will be out. It was plumb in front of the wicket, and the umpire had no hesitation in declaring the batsman out. And that's what is the beauty of T20 cricket, Daboda. बिल्कुल शंकर, और जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो भी मुकाबला होता है वो इसी तरह से आगे बढ़ता है। और अर्शदीप ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है आखिरी अवसर पर, बिल्कुल प्लम मिडिल स्टंप के सामने आया पैर और गेंद पैड पर टकराई। अर्शदीप की गेंद आसिफ अली जिनका कैच छूटा था उनके हाथ से, और अपनी तमाम संभावनाएं जीवित करते हुए अपनी टीम के लिए अर्शदीप सिंह, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अंतिम ओवर में। और क्या अर्शदीप मैच के हीरो बन सकते हैं, ये अब बची हुई बॉल पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने लिया है डिसीजन, रिव्यू लिया है, और उस रिव्यू पर क्या, क्योंकि एक पिछला रिव्यू जो था मतलब बहुत देर तक चला, मुकाबले का जो मोमेंटम है वो भारत से दूर चला गया था। लेकिन यहाँ अंपायर के निर्णय का इंतजार, रुचिरा पल्लिया गुरुगे, और 3 अंपायर का डिसीजन है आउट। और इस तरह से आसिफ बहुत निराश होकर मैदान छोड़ रहे हैं। 2 गेंदें बाकी बची है, 2 रन की चुनौती बाजी बची है, और मैदान संभाल रहे हैं। ये केवल 2 गेंदों का खेल बचा है, लेकिन ये 2 गेंदें जिंदगी भर याद रहेंगी अर्शदीप सिंह को। Just the way he dropped the catch. If India wins, he'll remember the final over. If India loses, he'll remember the dropped catch. So either way, it's time to remember for Arshdeep again. Surya Kumar Yadav now offering his bit of
suggestions to Rohit Sharma. Another dot ball here, on a wicket. Can definitely bring back life into the game. But the Indians have done well, but barring one 19th over which went for 19 runs, that was the over which they were looking for. And Iftikhar Ahmed, the new man in, average of 29.9, and has a chance to become a hero in Pakistan, Iftikhar Ahmed. The run rate 9.15, and now the required rate is 6, which means Subscrbe now. It's pretty impressive to watch this young bowler, not in any sort of bother, just the way Mahendra Singh Dhoni captain team. Subscrbe also looks to be in a very good frame of mind, which is pretty important for the 20th over. They can't catch in the 18th over. Spectators waiting fervently for this final moments of the game, and the listener who's listening to this all-important match between India and Pakistan will also be waiting for the finish. 2 of 2. Subscrbe, after conceding boundary of the second ball, followed it up with a dot ball and followed it up with a wicket. Will there be a twist in the tail? Another wicket for Subscrbe, or will it be a dot ball? Here is Subscrbe going into bowl to the new man, Iftikhar Ahmed. Throws in ball. Let's it straight down the ground. The ball will go over the boundary. No, it doesn't. Just a single second run being taken. And now Pakistan have won the match with 1 ball to spare. Subscrbe not able to repeat what he did on the previous occasion. And Pakistan emerging victorious by 5 wickets after winning the first encounter in this Super 4 encounter. So Pakistan win by 5 wickets. Stay tuned to All India Radio and listen to the program Hero of the 2020, moderated by Amit Arora and Sakshi Mandwal, with our experts Jai Sharma and G. Rajaraman. Thank you very much for listening. Namaskar. All India Radio is back with live action of Asia Cup 20 on FM Rainbow Network, primary channel.